first of all, I hope it is visible, whatever is on the screen. Yes. Good evening, folks. I'm Colonel V.D. Singh once again with you in this session, which is very much there, on your screens, making cover versions which are often contemporary versions of familiar songs. The topic itself is self-explanatory. That means, I try to make cover versions. That means the songs which have already been done in the past. And in those songs, it is not just copying a song verbatim in terms of, each and everything, but certain contemporary versions. Sorry for interjection. Kindly check your screen. We are just getting a black. Screen sharing is there, yeah, but the content वो नहीं दिख रहा है. Content नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है. स्क्रीन लेकिन है तो, और इसके पहले जब आपने दिखाया था तो कंटेंट भी दिखा था. अभी कुछ नहीं दिख रहा है कंटेंट. नो, खाली स्क्रीन का बैंड है. हाँ, अब आ गया. अब आ गया. अभी दिख रहा है. भी दिख रहा है. हाँ, दिख रहा है. बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो है दिस पर्टिकुलर थिंग, यानी ये शो प्रेजेंटेशन वाले उसमें नहीं है. इट इज इन द एडिट मोड. हाँ, तो फॉर वॉट एवर रीजन देन एडिट मोड में खाली एक एक पिक्चर को आप फुल स्क्रीन कर दीजिएगा. दैट्स ऑल. मैं फुल स्क्रीन करता हूं तो आपको दिखाई दे रहा है अभी? नहीं. रियली ये चीज भी बहुत अजीब चीज है जो कि अब तक. Now it is okay. Now it is okay. I think you are again on that edit mode or whatever. एक मिनट, ये तो बट एडिट मोड में आई डोंट नो प्रेजेंटेबिलिटी कैसी होगी. सर इट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. हाँ जी. इसको सर स्लाइड शो में जाके देखें. हाँ, स्लाइड शो कर रहा हूँ. देखो विनय, स्लाइड शो कर रहा हूँ मैं. नो, इट इज नॉट स्लाइड शो सर. स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग करके देखिए. एक मिनट. स्लाइड शो. ओके. ये मेरे वाले में दिखा रहा है कि screen share is paused. That means there is some problem. There is some problem in sharing itself. It's not the problem with the PowerPoints. There is some problem. Now it has again gone black. अभी फिर ब्लैंक हो गया ये. नहीं, अभी तो आ रहा है. अब आ रहा है. अभी आ रहा है, बट वो एडिट मोड में ही आ रहा है, छोटे में आ रहा है. Now it is blank. This is really ये टेक्निकल ग्लिच मेरे ही सिस्टम से हो रहा है ये. सर आप अपने स्क्रीन पे फुल स्क्रीन कर पा रहे हैं क्या? हाँ, कर रहा हूँ, बिल्कुल कर पा रहा हूँ मैं. इसलिए अभी दोबारा निकल गया शेयर स्क्रीन से और फिर मैं दोबारा शेयर स्क्रीन करने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड माइक्रोसॉफ्ट. इट्स द सेम. वही प्रॉब्लम है. वही प्रॉब्लम. I think we can go ahead with the same. With the अच्छा इस okay. we can go ahead. Edit version. क्योंकि जो selected slide है वो तो दिख ही रही है. That is readable. Okay. Making cover versions which are often contemporary versions of familiar songs. Okay. हाँ, ये ठीक है. I think we can go on. Go on. So in this, I want to start off with this prologue. That most of the familiar songs, old songs. I mean, again, familiar songs is something which is a personal choice, but they often become chart busters like Binaga Geet Mala and top 10 chart busters. इस किस्म के जो songs होते हैं, which are generally liked by all age groups. These are the songs which are remembered for many years to come. So in these songs, you will find that
most of these familiar songs are old songs. I mean, without undermining the latest trend, but abhi aap dekhiye, these reality shows and all that, they generally, you know, they sing all those songs which have already been sung 40, 50 years or 60 years back. But because the songs were so melodious and very, very lyrical that, you know, people like those Chargebuster songs. So I generally do my research on those songs, and especially those songs in which I can do justice by means of singing. So the trend is to make to remake or remix the same songs. Now, when we say remake and remix, these are two different things. Remake of a song is a very tedious process because you are actually going to play all those instruments which were more or less used in the song at that point of time. While remix is, you already have that original song on the track and you're mixing some, you know, beats, Bhangra beats or, different types of beats, which we generally hear in the marriage parties and things like that. I'm not a remix man. I remake. So that's, that's the basic difference between a remake of a song and remix of a song. And very often music makers end up making DJ versions where the beat mapping is done with the heavy bass and drums, basically to make people dance. And this trend is very much in vogue, but it becomes noisy after some time. I'm sure most of you must have experienced इवन जो बहुत अच्छे गाने भी होते हैं उनको बहुत हाई वॉल्यूम एंड कान फाड़ने वाली जो डीजे बीट्स होती हैं उसके साथ करके, सो दे मेक काइंड ऑफ अ रीमिक्स. So what I'm going to tell you about is the remake and not remix. So my way of doing things is basically I grew up listening to all these melodious songs, including retro music, Bollywood as well as Western music. And during school time, I had my own band in class 12, and which was there till I finished my graduation. So fortunately, I got into the right kind of set of people at the right place, that is Lucknow, the place where I belong to. And so from where, I started off as a greenhorn, a budding artist, and they picked up several instruments one by one to achieve, expertise in those musical instruments. So ये मैं इसलिए बता रहा हूँ because this makes the background of remaking of a song. In remaking a song, as I told you, you need to make that song in terms of playing in each and every instrument which was used at that particular time. So काफी research work इसमें लगता है. And I was fortunate that later on I got opportunity while I was studying in Lucknow University. To assist in professional studios as a sound recordist. Those times we used to call it sound recordist. Now they are known as sound engineer or audio engineer. So all these skills have ultimately helped me to establish my own home studio at a later stage. And to illustrate this, I've chosen a peppy song. एक बड़ा मशहूर गाना है रफी साहब का, अकेला हूं मैं. 1962 की मूवी है बात एक रात की. The music composer was S.D. Burman, and original singer is Rafi Sahab. So let's hear the original song. Can you hear it? Yeah, coming sir. We can hear, sir. Listen to the original one. अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया. अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया. अकेला हूँ मैं.
ना तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का। सुनी सुनी राहें थामती है बाहें गम किसे मंजिल का। ना तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का। सुनी सुनी राहें थामती है बाहें गम किसे मंजिल का। मैं तो हूँ राही दिल का, साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। आ, 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 जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। चांद सितारों पे चले, साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। I'm sure you have heard this song earlier. Yes, sir. Okay. So with this was the original song recorded in 1962, sung by Rafi Saab, S.D. Burman Saab ka music tha. And so a complete makeover of this original song using various instruments, basically to give it a retro effect. That is a challenge. And I have tried, the same track will be sung by me. And I've tried to make it as realistic as possible. However, the kind of instruments which I'm using are actually taken from samples, from my keyboard, which is my basic workstation. And those actual audio samples which I've played on the key to create that effect, like accordion ka effect ho ya ensemble ho ya koi bhi ho. Except that the guitar and the bass guitar is the two instruments which I actually play. That is overdubbing after I do my complete song, because these are instruments which are available in my studio and I actually play those instruments. Otherwise, other instruments I've got on my synthesizer, which is a Yamaha synthesizer, which has got samples of actual instruments. So they sound like the original instruments. And so I do complete recording plus its post production in my own home studio, which all of you know is known as Padarth Studio, with its presence on the net. And it is already there on my YouTube. In your own time you can hear, but in this session I'm going to present this number in front of you.
I'm just searching for the track. Please bear with me. I hope you can hear the voice. इंस्ट्रूमेंट नहीं आ रहा है. Instrument is not. Instrument सुनाई नहीं दे रहा है. Very faint. Very faint. Okay. Okay. Audible? No, the instrument is not. You're audible. Yeah. अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया. अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया. अकेला हूँ मैं. न तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का. सुनी सुनी राहें थामती है बाहें गम किसे मंजिल का. न तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का. सुनी सुनी राहें थामती है बाहें गम किसे मंजिल का. मैं तो हूँ राही दिल का, ओए साथी है तो मेरा साया. अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया. अकेला हूँ मैं. जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले. जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले. चांद सितारों के तले, ओए साथी है तो मेरा साया. अकेला
इस दुनिया में कोई साथी है तो मेरा साया, अकेला हूँ मैं. I hope you heard this version done by me. Beautiful, sir. Beautiful. Wonderful. As always, wonderful, wonderful. Wonderful. Thanks, Vani. बहुत ही अच्छा. So the way, I do these covers is basically I lay down individual tracks for each thing, like rhythm, chord section, ensemble, harmony, percussion, and finally the vocal track. So careful selection of right kind of musical instrument is an inescapable requirement, क्योंकि वो instruments को दोबारा फिर से create करना it's not an easy thing. So this, as I told you, this this requires synthesized samples to be selected very, very carefully. क्योंकि keyboard के ऊपर you have got thousands of instruments. Which instrument to select? This is the actual thing, जिसको कि हम कहते हैं कि research work वाली बात है. And then of course I overlay all these things by actually playing the actual guitar in my studio. And so ये थोड़ा सा इससे एक realistic effect आता है. And पहले सर गाने को एक बार रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके ऊपर से गिटार को सुपरइम्पोज किया जाता है क्या? हाँ, नहीं ऐसा है विनय जी. इसको क्या करता है, जो थंब रूल उसका ही होता है. जैसे अभी आप इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे ढेर सारे कलरफुल हॉरिजॉन्टल बार दिखा. दिस इज एक्चुअली माय digital audio workstation, which is called DAW. This is a music recording, editing, and post production software. The particular flavor which I am using for my recording is known as Nuendo. This is a German. It's a German software, and they have created it beautiful. It's a complete suite actually. So इसमें you can say that each horizontal line which you are saying, it is showing individual track. It may be a stereo track, it may be a mono track. So the basic thing is, whenever we recreate a song, we have to know its rhythm, जो उसकी क्या timing में है, whether it has been played in 2/4, 4/4 or 3/4 जो beat pattern होता है. And since my way of interpreting things is in Western music, तो मैं उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ. सो we have to know the complete sequence. पूरा सॉन्ग पता होना चाहिए क्या है ये, by listening to the original song. जी. उसको सुनने के बाद I create something known as a sheet, music sheet. So वो sheet के ऊपर ये पता लगता है how many bars, timing, a small unit of musical जो measure होता है, musical measure, उसको हम बोलते हैं bar. This bar is different from what the bar I'm having in my drawing room. वो different type का bar है. This bar which I'm talking about is used in music. So इसमें basic rhythm pattern होता है, और उसके ऊपर थोड़ा सा basic chord pattern होता है, कहाँ change होना है. But it is this particular first जो track होता है उसमें as such music नहीं होता है. फिर subsequently इसमें add करते हैं prelude, interlude. हाँ जी. और फिर इसमें और इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ensemble, means 50 violins playing together, वो एक इफेक्ट आना चाहिए. और एक छोटा सा गाइड ट्रैक भी होता है, तो वो भी रहता है इसके अंदर. एंड सिमिलरली you keep on adding various tracks करते अल्टीमेटली गिटार का ट्रैक होता है, in which I plug in my guitar in the mixer and I play that guitar. तो वो सब होने के बाद फिर सबसे लास्ट में आता है वॉइस. तो वॉइस के लिए फिर माइक्रोफोन, जो गाने वाला माइक्रोफोन है, उसको सीधे अपने मुंह के आगे करते हैं. एंड देन आई पुट ऑन दी हेडफोन्स एंड जो मैंने ऑलरेडी पहले से क्रिएट किए हुए हैं ये ट्रैक, ये उसी के हिसाब से हैं. सो आई हैव टू सिंग इन सिंक विद द ट्रैक. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे आजकल आप लोगों ने सुना होगा कराओके ट्रैक. कराओके इज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज इन कराओके लिरिक्स जो है वो आपके सामने चल रहा है. आई मीन इट इज एक्चुअली मूविंग इन फ्रंट ऑफ यू, जो कराओके बार्स वगैरह में चलता है. जी. The thing which I do,
जैसे स्टार मेकर वगैरह में आ रहा है। स्टार वेक मेकर में आ रहा है, तो वो भी जी, बहुत जी। अच्छा होता है। अपनी उसके ऊपर भी एक मैंने सेशन लिया था आज से 2-3 महीने जी पहले। जी, मैं अटेंड किया था। आपने अटेंड किया था। तो ये जो मैं चीज कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली प्रोफेशनल स्टफ, दिस इज नोन एज बैकिंग ट्रैक, यस सर। जिसमें इसमें कोई लिरिक्स नहीं है। तो इसमें म्यूजिक है, मैं सुन रहा हूँ उसको, एंड देन आई एम सिंगिंग अलोंग विद दिस, and I बहुत can बढ़िया सर। record, and I can also give my live performances, which I've been doing. I've been doing live performances using backing track. तो थोड़ा बहुत बैकिंग सर। ट्रैक का लोगों को ज्ञान भी मिल जाता है कि एग्जैक्टली जी है क्या चीज ये, व्हाट इज द जी डिफरेंस जी बिटवीन अ बैकिंग ट्रैक एंड जी जी। एंड कराओके। बहुत तो अच्छे सर, बहुत तो अच्छे हाँ, सर। तो इसमें क्या होता है, रिदम, कॉर्ड, हार्मोनी, ये सारे जो है ये स्टीरियोफोनिक चैनल्स होते हैं, बिकॉज यू वांट जी टू फील द डेप्थ। जी जी जी। तो जबकि वोकल हुआ या गिटार हुआ, वो जो होता है वो मोनो ट्रैक्स होते हैं, विच गिव यू अ सेंटर्ड वॉइस। सो सर। ये फर्क है। स्टीरियो का मतलब ये हुआ कि आपके पास चारों तरफ से आवाज आ रही है, हाँ हाँ। लेफ्ट राइट एंड देन इन बिटवीन ऑल्सो, एंड मोनो जी, ट्रैक मीन्स जस्ट वन ट्रैक। वन ट्रैक। तो वो जो मोनो ट्रैक वाली चीज होती है, मोनो ट्रैक की वो चीज सेंटर्ड वॉइस होती है। दैट मीन्स यस फ्रॉम बोथ द स्पीकर्स इक्वल अमाउंट ऑफ वॉइस Sir, इन विच आई एम sir, सेइंग। सर। टाइम। this particular session link may हाँ, expire at 6 o'clock. अच्छा, नहीं तो अभी खत्म ही होने नहीं वाला नहीं है नहीं ये। नहीं हाँ, नहीं नहीं, in हाँ, case अच्छा नहीं अच्छा, एक्सपायर। in case it is not हाँ, getting over, then we are continuing. देन वी आर And in कंटिन्यूइंग। हाँ, case it is getting over, so you are aware we have got just 1 minute. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो बट why do we sort of reinvent wheel for making doing a remake of a song? सर। So because I love to do experiment, and so that's how I translate my musical thoughts into the desired outcome which I want. और यस सर। और उसमें क्या फायदा होता है कि आई एम एबल टू डू हाई डेफिनेशन ऑडियो रिकॉर्डिंग विच इज प्लीजिंग टू द ईयर्स। जो चीज आज से 60-70 साल पहले रिकॉर्ड की गई थी, जी उसमें उस टाइम भी इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। नहीं। सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक ही माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो जाते थे, सिंगर के लिए अलग से चेंबर होता था एक बस एक। But today, in today's world, making use of technologies, I'm trying to do this kind of a fusion, making use of best of the technology, yet making the old song sound as good as it was when it was recorded. ओरिजिनल। Absolutely. So this is my sincere endeavor whenever I'm doing this kind of a thing. दैट And, इज वेरी गुड सर। बहुत अच्छे सर। तो नेक्स्ट बहुत प्रोबेबली बढ़िया। प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में कुछ एक किसी किस्म के और भी मैं ट्रैक्स लेके आऊंगा आप लोगों के सामने, बिकॉज द स्टोरी डजंट एंड हियर विद जस्ट वन सॉन्ग, कि मैंने कैसे उन पुराने, यानी इवन आई हैव इवन क्लासिकल सॉन्ग्स आल्सो। आई एम नॉट अ क्लासिकल सिंगर बट आई हैव अटेम्प्टेड। तो उनका रीमेक मैंने कैसे किया, उसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। दैट मींस द नेक्स्ट सेशन विल बी एन एक्सटेंशन ऑफ दिस सेशन, but with more examples. This is what I intend doing, and hopefully the technical glitch, in which the this thing is not being visible, when I do in the slideshow mode. तो hopefully वो भी चीज खत्म हो जाएगी शायद, because I know it must be it must be showing all blank to you right now. However, thank you very much for your patient hearing, and in the next session we will surely do things in a much better form, and take up certain more songs, उनका ओरिजिनल वर्जन क्या था और उसका फिर दूसरा जो वर्जन मैंने किया वो कैसे किया।